Today we are discussing economic current affairs for the June 3rd week and the June 4th week. Okay? Is my voice clear to every one of you? Are you able to hear me properly? Those who have joined for the very first time and those who are following me, I would like to tell all of you that we are doing a complete economic current affairs series. Okay. If you have seen in the thumbnail, it is properly written that it is a lecture 4. So it means what? Till now, 3 lectures, nothing but 3 weeks current affairs of economy are clearly done. Okay. Make sure that you don't skip the economic current affairs, as I've already told you, many a times I have told you that 2025 prelims or 2024 prelims, 2023 prelims, whatever the prelims paper you take up, nearly about 20 questions are coming from prelims economy. 20 into 2 is 40 marks. If you have seen the cutoff marks which are put in the official website of UPSC, so the cutoff marks are ranging for the top categories from 85 to 90. So 40 marks is half of 80 also if we take up. It means what? In environment and economy and current affairs, if you are perfect, it means you can easily sail through the preliminary examination, then becomes mains part which becomes more easy as you get to write more of the content and that is less of facts, right? So make sure that you don't skip the sessions whatever we are doing. It is a lecture number 4. So on the thumbnails of all my lectures, L1, L2, L3, L4 are written. Economic current affairs, it's not just a static or I'm discussing only with regard to the prelims. It's not this much only. The current affairs also includes lot of mains fodder points which gives you a basis for the next year prelims and the mains examination. एक साल में कुछ बदलने वाला तो है नहीं. ज़्यादा से ज़्यादा एक economic survey और budget में programs ही देते हैं. So basically budget is all about what programs and scheme and allocation, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है. Economic survey आए तक आपका prelims भी हो जाएगा और उसमें ज़्यादातर factual data ही पढ़ना है. Economic survey is a document majorly focus on what थोड़े बहुत questions उसमें आ सकते हैं, that is with regard to the mains examination. Okay, but as a knowledge gaining आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं that is more than enough. Make sure that you don't consider all the time, ये दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि क्या current economy है, environment है. So you have to be very very latest, very current affair oriented only you have to study. It is not the case. ऐसा सोचना ही गलत है. Because if you talk about agriculture problems, those have been remain the same. वही agriculture problems सालों साल पढ़ रहे हैं, वही मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम सालों साल पढ़ रहे हैं, फिर वैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, वही पढ़ते हैं. द ओनली थिंग इज दैट न्यू स्कीम और न्यू प्रोग्राम विल बी एडेड. एक न्यू एलोकेशन दिया जाएगा या एक न्यू मिशन जो कि टाइम बॉन्ड होगा वो होगा अपने पास, या कमिटी रिकमेंडेशंस यू विल गेट. So basically the structure of any topic will always remain the same. You just need to add few extra points when you are going to attend. These are the simple things that you have to understand. Okay. Right. In our last class, what have we done? In the last class of ours, we have done with aging report of India. We have seen Indira Gandhi old age pension scheme. We have seen Human Development Index latest 2025 rankings. We have seen poverty rate 2025, global gender gap, press freedom index, environment performance index, education and learning outcomes by the ACER report. We have seen democracy index, new electronic sector report also we have seen. All of these we have covered, and before that also there was 10 current affairs we have covered. So that 10, this 10, almost 20. Today we are going to discuss these topics. Okay, very important topics of last 8 to 9 days of economics. Okay, these lectures are important not only for the UPSC, obviously for the state PSC also. These are very much common. Okay, we are going to discuss about Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, impact of oil prices on various sectors of economy. 9 years of start of India happened, and we should be knowing what is that, what have we done in the 9 years. Did we achieve the goals or not with regard to that. हमेशा ये भी याद रखिए, whenever जब भी एक स्कीम होती है, अगर वो सालों साल चल रही है, 8 से 10 साल होने आ रही है, तो आपका काम यही है कि उसका मेंस आंसर प्रिपेयर कर लेना अपन. क्योंकि ऐसे बड़े बड़े जो
programs होते हैं which actually extend for 10 years like that. A mains question directly come into a in the examination. Plus prelims के लिए बहुत deeper पूछ लेते हैं, इसलिए we should be knowing about it. इंडिया अफ्रीका का एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुआ है विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. देन वी हैव सम स्कीम्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय नीति आयोग. वन इज शून्य स्कीम, another one is e amrit. We'll talk about this also. Now yesterday only the government of India is considering to release IPOs for public sector banks. We'll talk about it also. Then the new report, yesterday only we have got a report, sustainable development goals progress report we have got. We are going to discuss about that also. Then we are also talking about India to launch first national wide household income survey. Household income survey is different from the census. Census is being conducted by the government of India, and it is mandatory in what, according to the constitution also, which gives a provision of constituting or conducting the census. Whereas this is, and census talks about various factors of our social and demographic economic aspects. Whereas ये जो survey है, it is only about what, household income. Household, basically the definition of household is very simple. A family of 5 members is called as household according to economics. And recently the definition has undergone a change. Now the household means any number of people who derive food from the same kitchen. Then it is called as household. Okay, why do we do that? I will explain you in the particular topic that we are going to discuss at that time. Clear? Okay. Now, one small question in front of all of you, a very basic question I have put in. Slowly we'll increase the severity or difficultness of this particular questions also. But as because we have started a series just before, make sure that you get accustomed to what I will teach to you. Make sure that why I will come to the class and what topics I will be discussing and what length I will be discussing. So if you follow me 3 to 4 classes, you will get in sync properly, and that will become a 1 minute of our class of yours every day. So make sure that you don't skip it. So this is a very basic question. Any of you who are preparing for the examination, you should do this question. Okay, ये तो आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है? Who among the following releases a Sustainable Development Goal National Indicator Framework Progress Report 2025? So which among the following organization actually releases this particular report? SDG National Indicator Framework Progress Report. NITI Aayog, MOSPI, Ministry of Human Resource Development, none of the above. What is your answer? Please write in the comment section. Very good morning Sailesh and very good morning Rohan. So please do this. If you are wrong also, no need to worry. अगर आप बोल सकते हैं तो बोल लो, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे. बट क्वेश्चन पढ़ना और आंसर भी उसका देना, वेदर राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर. व्हाट मैटर इज अगर आप इंटरेक्ट करते रहेंगे, एंगेज होते रहेंगे क्लासेस में, व्हाट हैपेंस इज योर फोकस विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड और आपको क्लासेस भी अच्छे लगने लगेंगे, ठीक है? राइट. सो व्हाट इज द आंसर? दोज आर वॉचिंग मी, आई एम आस्किंग यू गाइज ओनली. So many of you might be thinking that it is NITI Aayog, but NITI Aayog is not the right option here. It is the MOSP, Ministry of Statistics and Program Implementation. They have released a report called as SDG National Indicator Framework Progress Report. I hope this is clear to you. Okay? Let us now go ahead with Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. The first time this program was launched was in the year 2000. Okay, the first time this program, Gram Sadak Yojana. So I will try to elaborate it with explanation. Pradhan Mantri PM. Gram is nothing but rural area. Okay, or you can say village. Sadak is nothing but road. Okay, Yojana is nothing but program. So rural road development program, you can say this one. This program was first introduced in the year 2000. Goal is very simple, to improve rural infrastructure through road connection. Suppose if there is a proper road is there, roads are there near around our area, then only what do? We'll try to put a market, we'll try to sell a market, we'll try to put a shop of our business, right or wrong? Suppose आपकी शॉप को आने के लिए ही आपके पास रोड नहीं है, तो आप कहीं क्यों लगाएंगे वहाँ पे? आप तो वहाँ पे नहीं लगाएंगे शॉप, राइट? तो रोड कनेक्शन से क्या होगा? ओके, वॉट एवर दी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ईजिली कनेक्ट होता है. This point you have to remember. So road is one of the basic ingredient of development of any area. If road connectivity is not there, because
हम यहाँ पे एयरवेज कनेक्टिविटी की भी बात कर सकते हैं, सी पोर्ट की भी बात कर सकते हैं, रेलवे की बात कर सकते हैं, बट रोड कनेक्टिविटी इज़ अ बेसिक, कम पैसों में काम होने, अगर रोड डालना है, अगर कोई एरियाज को कनेक्ट करना है तो हम रोड से कर सकते हैं, राइट। ओके, एंड रोड पे ही गरीब लोग चलेंगे और उनका बिजनेस चलेगा, सो वी कैन नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू व्हाट एयरवेज, वाटरवेज और रेलवेज। फिर वो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज आर नॉट एट ऑल फीजिबल। अगेन ये पूरे बड़े बड़े जो कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, दिस विल नॉट हेल्प इन द गली नुक्कड़ में। अब ये कहाँ पे रखेंगे, वी कैन नॉट डू दैट। So road is one where with the help of which road connectivity you can able to supply to nook and corner of the country your products and services. That's what is road. So whenever you develop the road, automatically it will lead to what, construction of rural infrastructure भी बन जाएगा वहाँ पे. Then the second phase of this program was launched in the year 2013. Okay, 2013 is also a year where we have also formulated a law called as National Food Security Act, with the help of which we are able to run our PDS scheme. ठीक है. Another component, road connectivity project for left wing extremist affected areas. Left wing का मतलब होता है कि very they are very extreme ideology होती है and they don't move from that particular ideology. So left wing. Okay, so here we are talking about the areas which are in the Naxalite or Maoist control. That particular means not control exactly, that has the dominance. That areas are called as left wing. Left wing is nothing but an ideology which is completely based on what, communism. Okay, right wing is nothing but conservatism. बीच में जो आता है we call it as what, liberal. Okay, which is nothing but socialism. Fine. So here you have to understand the point. The first program was in the year 2000, then the next we launched in 2013, gave importance to what, Naxal areas, वहाँ पे road डालना है. Okay, was established in 2016 to construct rural roads in LWE affected areas. The third installment of प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना 2019 में आया. Phase 1 बोल सकते हैं, Phase 2 बोल सकते हैं, this is Phase 3. Then again in 2024, the central government approved Phase 4 to provide all weather roads. All weather roads means the roads that can able to sustain themselves, summer season रहो या rainy रहो या winter रहो, कौन सा भी season रहो, roads अच्छे चल रहे हैं, that is only called as what, all weather. हर weather में काम करने वाले road. ठीक है, with the help of which अपनी supply chain disrupt नहीं होती. Otherwise अगर road ख़राब हो जाती है rainy season में तो फिर कहाँ से फिर raw materials and finished goods we cannot transfer, वो problem हो जाता है, right. So phase 1 was launched in the year 2000, phase 2 was launched in the year 2013, 3 was launched in the year 2019, and fourth phase of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana came in the year 2024. So basically to provide all weather road connectivity to 25,000 unconnected habitations. Habitations का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पे households है, जहाँ पे घर है, ठीक है, बट वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है. तो ऐसे आइडेंटिफाई करो जो कि लाइक ऑलमोस्ट अराउंड कितने 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस, ऐसे एरिया जहाँ पे रोड डाली हुई नहीं है, ठीक है, वैसे एरियाज को आइडेंटिफाई करो. और कितने आइडेंटिफाई करना, 25,000 अनकनेक्टेड habitations with a population of 500 or more in plain areas and 250 or more in the northeastern and hilly areas of UTs, and also special category areas of tribal schedule under tribal areas of under schedule 5, and also aspirational district and block district desert areas. So you can understand that phase 4 में the basically phase 1 में plain areas and hilly areas के बारे में ही दिया गया है. Okay, in 2000 when the scheme was introduced, but after in phase 4 2024 में, apart from plain areas, apart from tribal areas, you can say that they have enlarged the scope of this particular scheme by including tribal areas of schedule 5. They have also included special category states, which AP government is wanting this particular status. Even Bihar government wants this special category status. Okay, then aspirational district blocks, aspirational districts, desert areas. So you can understand that the scope of this particular scheme has increased to different types of areas. Okay, and 100 or more in left wing areas affected according to the census 2011. 2000 census 11 के हिसाब से 100 or more in the left wing affected areas में भी ये scheme चलाई जाएगी. Okay, according to the census 2011. I hope this is clear to you.
It's a completely centrally sponsored scheme. The funding pattern was in the year 2015 to 16 was around 60 to 40 space 60%. अगर समझिए तेलंगाना में, इन तेलंगाना, if under this प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, under this ग्राम सड़क योजना, government has central government has said that we will construct around 100 kilometer of roads. Like that, central government proposed 100 kilometer of road construction in Telangana. So to construct these 100 kilometers, let us suppose we require 10 crores. We require 10 crores. Okay, that is the project. In that 60% means what? 6 crores will be given by central government and 4 crores will be contributed by state government, nothing but Telangana government. So जो भी expense होता है, जो भी expense वो scheme के ऊपर होता है, वो expenditure सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को साथ में इक्वली शेयर करना होगा. दैट इज ओनली कॉल्ड एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. अगर इसके जगह पे अगर आपको आता है सेंट्रल सेक्टार स्कीम, जब भी आप ये सेक्टार स्कीम देखते हैं, इट मीन्स व्हाट 100% फंडिंग होती है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. बट दिस स्कीम इज व्हाट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद अ स्प्लिट ऑफ 60:40. The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana requires the contractor to maintain all roads for 5 years after construction is completed. Obviously, government के पास National Highway Authority of India है, right or wrong? Basically, they are looking after what? National highways. In the same way, we do also have, हर state में होती है State Highway Authority. So वो they look after what? State highways. State government look after district roads, rural roads, etc. पंचायत राज will look after पंचायत roads. Roads and Building Department बोल के हर स्टेट में होता है. सो दे विल लुक आफ्टर, अलग अलग एजेंसीज अलग अलग रोड्स बनाती हैं स्टेट में भी. बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू नेशनल हाईवेज दे विल मेक. राइट नाउ you do not have a agency. अब ये जो एजेंसी है, these are regulatory bodies, nothing but they don't actually involve in the, वो फील्ड पे जाके रोड नहीं बनाते, टेंडर दे के सीमेंट लगा के फिर रिक्रूट करके. गवर्नमेंट डज नॉट डू दिस. गवर्नमेंट व्हाट जनरली डू इज, सो दे विल गिव द टेंडर, और कॉन्ट्रैक्ट दे विल गिव टू द प्राइवेट प्लेयर्स. सो हियर अंडर दिस स्कीम अगर 100 किलोमीटर की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रोड बनाना है, so Telangana government will give the tender of 100 kilometer road construction in so and so district. एक डिस्ट्रिक्ट में 5 किलोमीटर, एक डिस्ट्रिक्ट में 5 किलोमीटर, ऐसा टेंडर देते. लाइक देने के बाद प्राइवेट प्लेयर्स जो भी है, आपके घर में भी कोई कंस्ट्रक्शन करते होंगे, गवर्नमेंट के लिए काम करते होंगे, रोड बनाने का या मोरी बनाने का या कलवर्ट्स बनाने का, वॉट एवर इट इज, दे विल अप्लाई फॉर इट, राइट, एंड दे विल गेट द टेंडर टू मेक दैट पर्टिकुलर रोड. सो यहाँ पे एक प्रोविजन, वेरी गुड प्रोविजन इज देयर, वेन एवर ए कॉन्ट्रैक्टर मेक्स ए रोड, उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा 5 years तक. दे हैव टू मेंटेन इट ऑल्सो. मीन्स अगर पॉट होल्स हो जाएंगे, ठीक है, इफ़ देर इज़ ए लाइक खड्डे हो जाएंगे रोड के बीच में, या कुछ वाटर लॉगिंग कंडीशंस होकर ड्रेन हो जाएगा और रोड यूजफुल नहीं होगी. सो इन दिस सिनेरियो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट contractor to make it for 5 years. They have to use it. Okay, this is accomplished through the use of a mobile and web-based application, e-mark. Very important e-governance initiatives में आता है e-mark, electronic maintenance of rural road system. It is a e-governance tool for managing and tracking rural road repair. So whatever the problems are there on the roads, okay, with the help of this e-mark, they can able to track and they can see that how much of the roads or roads have been repaired and how much roads have to be repaired, और कितना बाकी है रिपेयर करना और कितना हम रिपेयर कर चुके हैं. दिस इज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन मे कम इन द मेंस एग्जामिनेशन. रिमेंबर दिस पॉइंट, डायरेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा है इसमें, क्योंकि 25 साल से, मतलब 2010 हो गया, 2020 हो गया, 25 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है. 4 फेसेस हो चुके हैं, बहुत आगे बढ़ रही है गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर स्कीम, और ये आने के 99% चांसेस है विद रिगार्ड टू प्रीलिम्स और मेंस. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दोज हु आर वाचिंग मी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया? और डू यू वांट मी टू रिपीट एनी स्टेटमेंट दैट यू माइट हैव स्किप्ड or you did not get through in your mind? Anyone? Any doubt is there with regard to this Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana? Doubt है तो पूछिए. You don't have to worry about it because live sessions are being conducted in order to make interaction with you. Otherwise वैसे भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज ऑल्सो मेक सेम सेंस. बट लाइव सेशंस इसलिए करते हैं एंड ऑन टाइम इसलिए करते हैं कि आपको एक कंटिन्यूटी रहे, प्लस यू कैन इंटरेक्ट विद अस एंड यू कैन ऑल्सो नो मोर अबाउट
the institute or the quality that we give, the content, and you will also get what? Content. Now, the second important topic of discussion that we are having, impact of oil prices on various sectors of economy. थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, थोड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी ट्रू. So whenever there is an increase in oil prices happens, and manufacturing sector will get affected, because manufacturing sector, the industries will run on large amount of power which we get through what? डीजल से मिलता. जब oil prices बढ़ जाते हैं, so diesel prices will also increase, and this increase in the diesel prices, they will include in the cost of making of goods and services, right or wrong? Cost of making of goods. That's how what will happen. After the producer makes the product, he will increase the price because he has to cover the increased price of crude oil. जो भी increase हुआ था crude oil price, उसको cover करना है product में. So they will increase the price to the wholesaler. Wholesaler will get the products in higher prices. So inflation आएगा country में, as a country में, and specifically wholesale price index will increase. Okay, these two are related. Inflation is a very larger phenomena. Across the country हम देखते हैं कि inflation आएगा. Okay, whereas WPI when we talk about is a micro concept. Inflation is a macro variable concept. Variable इसलिए बोलते हैं कि it varies, कभी ज़्यादा कभी कम होता है. Those are called as macro variables. Micro variables means छोटा सा impact होगा, and वहाँ पे भी it varies. The percentage will not remain the same. It generally varies. Okay, so WPI is in supply chain में who will get affected? WPI will get what? Increase. Obviously when WPI increases, automatically CPI increases, and the consumer has to bear the burden of what? Increased price. And overall, if this goes on continuing, then we will see a bigger problem of what? Inflation. Then we are having the paint industry. Paint industry जो भी crude oil refine करते हैं, वहाँ पे जो भी crude oil के derivatives आते हैं, crude oil derivatives we call it as, these derivatives are important for what? Making of paint. Remember this point. So if these derivatives, crude oil price अगर महंगा हो गया, so derivatives के भी price भी महंगा हो जाएगा. So that paint, Asian paints, Berger paints, they may also increase the prices of their paints. Petrochemical, chemical industries बेसिकली वैसलिन जो बनाते हैं, रेजिन्स जो बनाते हैं, ओके, ऑयल जो गाड़ी में ऑयल डालते हैं वो जो बनाते हैं, ऑल ऑफ दिस ऑल्सो कम्स अंडर फॉर एसेंशियल क्रूड ऑयल डेरिवेटिव से ही आता है. सो व्हेन द प्राइसेस ऑफ ऑयल increases, oil refinery prices increases, crude oil derivatives prices also increases. So whatever the petrochemical and chemical industry products are there, their prices will go increases. Remember this point. So basically होता क्या है, what happens is the moment there is a क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, जैसे कि इट्स नॉट लाइक इन रिफाइंड वन. रिफाइंड का मतलब होता है पेट्रोल डीजल, रिफाइन होते हैं केरोसिन. क्रूड ऑयल का मतलब है कच्चा तेल, जैसा ही ज़मीन से निकाले और हम उसको क्रूड ऑयल का नाम देंगे. ठीक है. क्रूड ऑयल, द मोमेंट ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीजेस, जनरली हाउ डू वी अंडरस्टैंड एट द बॉटम ऑफ आवर लिविंग, हमारे नज़दीक से हम कैसा देख सकते हैं ये. सो वी जस्ट सी द इंक्रीज इन वॉट? पेट्रोल एंड डीजल जो भी हम स्कूटर में डलाते हैं. सो वील सी द इंक्रीज प्राइसेस. सो मोमेंट समथिंग हैपन्स इन द global crude oil prices increases, we see at the ground level in the form of increase in petrol and diesel prices, right or wrong? But just see here, it's not that the people will suffer, but other industries will also take a hit, okay, because of what? Increase in crude oil prices. Some positive impact you can say, not exactly positive, not exactly negative, but एक चीज़ हुई तो एक चीज़ नहीं होगी यहाँ पे. Now if the crude oil prices increase in car manufacturing में, रबर है, ठीक है, plastics है, all these are again derived from what? Crude oil derivatives. Crude oil processing units में से ही ये निकलते हैं, right? So what will happen? कार का जो प्राइस है will increase, okay, car prices will increase. So people will shift towards what? EV लेना शुरू करेंगे, okay, because obviously prices are also increasing, means you cannot put more and more petrol all the time or diesel all the time, right? So increase in crude oil prices basically discourage the people to go for what? This, अगर पेट्रोल 150 हो गया समझो, लेट अस सपोज पेट्रोल हैज़ बिकम 150, नाउ यू विल थिंक 10 टाइम्स. आप सोचेंगे कि वेदर यू हैव टू बाई ए पेट्रोल और डीजल रन स्कूटर और नॉट. विल यू थिंक और नॉट? यस, you will think. That is what I am talking about. So the moment this prices of petrol and diesel goes very shooting up, we'll go towards what? EV ले लेंगे यार, वो काम आ जाएगी. That's how we understand, right? So boost to EV sector, which is also important to actually fulfill our committed
committed promises in Glasgow Summit, Paris Summit, and also transitioning from the fossil to the non-fossil fuel economy. Plus ONGC, OIC जो भी है, these are all what they are the natural oil and gas producer, so they will get what profits. इनको ये गवर्नमेंट के जो कंपनी से इनको प्रॉफिट आ जाएगा, so इनके लिए बल्ले बल्ले टाइप्स ऑफ सिचुएशन इज देयर बिकॉज दे आर ए प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट oil and natural gas. So with this what happened, as because their prices are also international market में जो prices चल रहे हैं, that prices only they will also take as a benchmark and put the price. So whenever there is an increase in crude oil prices happens in the globe, automatically these guys also will increase the prices of their crude oil, so they will get benefited. Another important industry I did not tell you which get affected is fertilizer industry. अगर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, ऑटोमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड दैट फार्मर्स विल गेट हिट. फर्टिलाइजर्स आर बेसिकली दे आर मेड, ओके, नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यूरिया, अमोनिया, दे रिक्वायर नेचुरल गैस, दे रिक्वायर ऑयल एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. तो नेचुरल गैस और ऑयल होना है, दे आर द रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर व्हाट, नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया and ammonia fertilizers. So when natural gas and crude oil prices increases, obviously the fertilizer prices increases. When fertilizer prices increases, so what will happen, the cost of production of agriculture, cost of production of crops increases. Cost of production of crops increases, again it either two things will happen, okay, the crops prices will increase and we will feel that tomato potato prices increase. So we will have this situation because जितना भी उनको इंक्रीज होगा वो इंक्रीज दे विल डू इन व्हाट, सेलिंग प्राइस ओनली दे विल डू. और एल्स नेक्स्ट क्या होगा, गवर्नमेंट विल थिंक अरे यार बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे फर्टिलाइजर के देन क्रॉप्स के, गवर्नमेंट विल गिव सब्सिडी. सो हियर यू कैन फील द बर्डन ऑफ व्हाट, feel the burden of increased prices on the government exchequer. Government will give subsidies so that prices will not escalate and everyone can able to afford what, food अच्छे से हम खरीद सके. So this kind of a bigger economic problem may get if the increase in oil prices happen. That is what I was talking about जब से. So generally हम समझते हैं कि चलो भाई ग्लोबल दुनिया में या वर्ल्ड में प्राइस इंक्रीज हुआ क्रूड ऑयल का तो फिर पेट्रोल डीजल इंक्रीज होगा और कुछ नहीं हुआ, इतना ही अपने को समझ में आता है, राइट. बट इतना नहीं है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वेन एवर क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज. सो आई हैव टोल्ड यू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट, ए प्रोबेबल क्वेश्चन इन द मेंस 2025 एंड दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज इवन फॉर 2026 और 2027. कौन सा भी एग्जाम लिख लो आप, लिखना तो यही है, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी, इज इट क्लियर? Please do a thumbs up or do write in the comment section if it is clear. We can go with the third important topic, that is Startup India scheme. Tomorrow also we have the class at the same time, 12:30. Today we'll cover some current affairs, tomorrow we'll cover some current affairs. Clear? Let us go ahead. Yes, chalo आगे बढ़ेंगे. 9 years of Startup in India. Startup India scheme was launched on January 16, 2016. It's a flagship initiative, one of the major initiative of government of India. Basically for what purpose? To foster innovation and to thrive startup ecosystem. ज़्यादा से ज़्यादा entrepreneurs आए हमारे कंट्री में, जितने ज़्यादा आएंगे इनोवेशन भी होगा. नाउ मेनी पीपल से दैट इनोवेशन कैसा होता है, क्या होता है. यू माइट बी आस्किंग मी दैट क्वेश्चन और दैट माइट बी रनिंग बिहाइंड योर माइंड दैट व्हाट कुड बी, व्हाट, हाउ डू वी परसीव इनोवेशन, हाउ डू वी सी इनोवेशन. इफ़ यू रियली वांट टू सी इनोवेशन कैसा होता है, आप शार्क टैंक इंडिया टीवी सीरियल पे जाइए यूट्यूब पे और देखिए. वहाँ पे आपको एवरी 2-3 जो भी पिच करने आते हैं एंटरप्रेन्योर्स, 2-3 में से एक तो डेफिनेटली बोलेगा कि ये इनोवेटिव प्रोडक्ट है. देन दे टॉक अबाउट इट, ओके. वो पूरे पूछेंगे शार्क्स की क्या इनोवेशन है, तो वो बोलेंगे सर ये करेगा, ये ऐसा नहीं करेगा, ये फूड में पहली बार हम शुगर लेस दे रहे हैं, नो कार्ब्स दे रहे हैं, ये इंडिया में कोई नहीं करेगा, ये केमिकल फ्री कॉस्मेटिक है, ये इंडिया में कोई नहीं करेगा, इसमें हम नैनो टेक्नोलॉजी लगाएं, ये इंडिया में कोई नहीं करेगा. सो दैट इज़ कॉल्ड एज इनोवेशन. एंड हाउ आर दीज पीपल आर कमिंग इन टू स्टार्टअप, बिकॉज गवर्नमेंट से लोन मिल रहा है तो ही स्टार्टअप हो रहा है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, मुद्रा स्कीम. स्टार्टअप इंडिया स्कीम में we don't get the money from startup scheme, we get the money through what, मुद्रा का जो किशोर कैटेगरी, तरुण कैटेगरी, ऑल दिस बाल कैटेगरी है ना, तो वहाँ पे अपने को लोन मिलेगा. एंड वाई दोज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आर कमिंग इन अवर कंट्री, इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स शार्क टैंक इंडिया में ही आप इतने देख लेते हैं. सो मेनी पीपल आर बिकमिंग वॉट, एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स, सोलोप्रेन्योर्स, वी कॉल देम एज सोलोप्रेन्योर्स. मीन्स
सिंगल हैंडेडली जो काम करते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, वी कॉल देम एज सोलोप्रीनियर्स. ओके, पार्टनरशिप भी होती है. सो वाई ऑल ऑफ हाउ ऑल ऑफ दीज आर कमिंग एवरी अदर टाइम मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सटेंडिंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ मुद्रा स्कीम. मुद्रा स्कीम में बहुत पैसा जा रहा है. एंड वाई दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस मेनी नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग एज ए स्टार्टअप मीन्स ये मुद्रा में जो भी पैसा मिलता है ना, कोलेटरल फ्री है. मतलब क्या है, आपको गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है, घर के पेपर्स रखने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू कीप एनी कोलेटरल टू गिव टू टेक द लोन्स. Okay, that is why people are easily able to take the mudra loans and they are going for startup. Remember this point here. Clear? Okay. So we with the help of this scheme we are able to foster innovation को हम बढ़ावा दे रहे हैं. We are going to that and thriving startup ecosystem. Its goal is to drive economic growth बढ़े and generate large scale employment opportunities. Just like every startup will have, first of all वो खुद को employment देंगे as a directors, founders. Then they will also have need a lot of people to work under them, right? So it actually generates a lot of employment opportunity by supporting startups in their growth journey. The initiatives encourages innovation and design. The various schemes aims to empower startup to scale and succeed. Already we have seen. So now let us see that what are the startups, how much startup we have, startup culture we have grown. 2016 में the number of startups that we had is 502. Now the startups are what, 1.57 lakhs. So you just imagine 502 startups were there only in 2016, now became 1.57 lakh startups. Very commendable, credible, astonishing, amazing, overwhelming, जितने भी superlative degree के words होते हैं इंग्लिश में वो पूरे यूज़ कर लीजिए. Because it's not double, it's not triple, it's like you just understand n number of x times of startups have been double, startups have been growth over a period of time. So 1.57 lakh startups है. All of them are recognized by what, DPIA, Department of Policy of Internal and Industry Trade. ये recognize करें, ऐसा नहीं कि they don't know. These are the startups which have already got license and got GST. 17.28 lakh employment generate हुआ है यहाँ पे. We understood the point, objective achieved. 75,935 startups are women directors, means women owned. You can say that women is one of the important person okay to take the decisions of the particular startup. So आप देख सकते हैं शार्क टैंक इंडिया में एक हस्बैंड वाइफ आते हैं, वाइफ विल बी सीईओ या हस्बैंड सीईओ होते हैं या वाइफ सीईओ होते हैं या हस्बैंड सीईओ होते हैं, वॉट एवर इट इज़, बट बोथ ऑफ देम कोलैबोरेटली टेकिंग द डिसीजंस आप देखते हैं, तो उसे ही बोलते हैं वुमेन डायरेक्टर. दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज वुमेन डायरेक्टर. ठीक है. अभी ये स्टार्टअप का कल्चर इतना अच्छा क्यों बना? वाई द स्टार्टअप कल्चर हैज़ ग्रोन फ्रॉम 502 to 1.57 lakh? व्हाट इज द रीजन बिहाइंडिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. सो टू स्टार्ट ए बिजनेस वेरी सिंप्लीफाइड कॉम्प्लायंस है, सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसेस है. सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब है कि आप ही टिक मारते हैं, हाँ ये है, योर स्टार्टअप इज़ गुड, योर स्टार्टअप इज़ नॉन पोलेटिंग, राइट. आप जीएसटी नंबर है क्या? यस, हाँ हमारे पास है. So when you do all the ticks by yourself and you submit the document, then it is called as what? Self certification हम कहते हैं. सिंप्लीफाइड कॉम्प्लाइंस मतलब है एक फॉर्म भरिए, आपको ज़्यादा ज़्यादा 2-3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, देन यू विल गेट व्हाट, लाइसेंस टू स्टार्ट योर स्टार्टअप. सो दैट इज कॉल्ड एज वेरी सिंप्लीफाइड कॉम्प्लाइंस. यू डोंट हैव टू गो टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ट्राई टू टेक पोल्यूशन फ्री का एक सर्टिफिकेट लो. जस्ट लाइक अपनी गाड़ी को 4 डॉक्यूमेंट्स वी रिक्वायर. पहली बात तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट चाहिए, देन यू रिक्वायर व्हाट, ड्राइविंग चलाने का एक सर्टिफिकेट चाहिए, देन यू रिक्वायर व्हाट, किसी को अगर हम गाड़ी मार दिए तो फिर उसका सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस चाहिए, देन पोल्यूशन कितना कर रही है गाड़ी उसका सर्टिफिकेट चाहिए. सो एक गाड़ी के लिए जो 4 सर्टिफिकेट है, दैट इज कॉल्ड एज वेरी कम्बरसम प्रोसेस बोलते हैं. वी कॉल इट एज कम्बरसम प्रोसेस. ओके, बेसिकली इट इज़ लाइक यू नीड टू हैव ए वेरी सिंप्लीफाइड प्रोसेस इन द सेंस इज दैट कि एक डॉक्यूमेंट में हर चीज़ लिखी हुई होना बेहतर है. सो वन कार्ड फॉर ऑल दी 4 थिंग्स ऐसा. तो दैट इज कॉल्ड एज, एंड अब समझिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अलग ऑफिस जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग ऑफिस जाओ, इंश्योरेंस के लिए अलग ऑफिस जाओ, और आपको पोल्यूशन के लिए फिर अलग ऑफिस जाओ. तो 4 ऑफिस जाके 4 सर्टिफिकेट निकालना है फॉर ए सिंगल, ओके, फॉर ए सिंगल बाइक टू राइड, एक बाइक चलाने के लिए. यू जस्ट इमेजिन. क्लियर? All of you who are watching me, is it clear to everyone what is the meaning of self certification?
Clear? Let us go ahead. So why startup culture is increasing in our country? Because of what? Very good ease of doing business is a tax benefit भी है. Tax exemption for 3 years has streamlined operations for startups. अब government tax ही नहीं ले रही है, so that the amount of money that they are struggling for at the start of their business, okay, government is not squeezing you. Okay, landlord तो है नहीं government की आपसे फिर वो और टैक्स ले मारे करे आपको, ऐसा तो है नहीं. सो गवर्नमेंट पहले ही बहुत परेशानी होती है स्टार्टअप स्टार्ट करके और फिर उसको चलाने के लिए, फिर गवर्नमेंट भी अलग से पैसा लेंगी तो माइंड तो वैसे ही ब्लॉक हो जाएगा, राइट. सो दैट्स वाई गवर्नमेंट से ठीक है भाई मत दो, 3 साल तक मत दो, आप पहले सेट हो जाओ, बाद में अब यूनिकॉर्न बनो, डिकेकॉन बनो, हेक्टाकॉन बनो, जो भी बनना है बनो, देन यू कैन गिव मनी. सो दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर दे हैव एक्चुअली पुट द tax benefit exemptions are given. Sector specific policies are also there. Some policies are continuously directed towards biotechnology. अगर आप कुछ वहाँ पे करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में कुछ करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में करते हैं, you will get what more benefits. So here government want to encourage science. Agriculture is one of the very important sector for our country. Renewable is obviously important when we are going for energy transition from fossil to non-fossil. Plus funding support is also given. 10,000 crore fund of funds for startup, fund of fund startup for is given for the early stage funding. Early stage का मतलब है when you start up your business, whatever the money you require to start your business for some period of time, for that purpose whatever the money is given from the government, that is called as early stage funding बोलते हैं. And it is also called as seed fund, means बीज लगा रहे हैं, means start कर रहे हैं, like that. Start करने के लिए पैसे चाहिए, so that is also given by the government of India. To strengthen regional startup ecosystem capacity building, workshops are also conducted year around, including non-metro cities में भी workshops गवर्नमेंट करती है. वहाँ पे आपको सिखाती है कि किस तरीके से स्टार्टअप करना चाहिए, what are the various verticals that they can do, कौन से मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, कहाँ पे वो लोन ले सकते हैं और लोन किस तरीके से पे कर सकते हैं. All these workshops are being done in order to promote startup culture not only in the metro cities but also in what rural areas. Then we also have Bhaskar program. डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड इसलिए बोलते हैं कि दिस डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली लुक आफ्टर द ट्रेड विच इज हैपनिंग विद इन अवर कंट्री. ओके, नॉट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ये डिपार्टमेंट नहीं देखता है. विद इन अवर कंट्री वॉट एवर द ट्रेडिंग बिजनेस, नथिंग बट खरीदना बेचना प्रोड्यूस करना, ऑल दैट विल बी लुक आफ्टर व्हाट DPIIT. So they launched Bharat Startup Knowledge Access Registry Platform in September 2024. This cutting edge initiative means बहुत अच्छी initiative है. Part of Startup India programs aims to centralize and streamline interactions within India's entrepreneurial ecosystem by connecting startups, investors. तो आप भास्कर ऐप डालिए, बिजनेस है तो वहाँ पे इफ़ यू वांट टू फाइंड ए इन्वेस्टर, वहाँ पे इन्वेस्टर हो गए, आप आपकी पिच करिए, ओके, आपका प्रोडक्ट बताइए. सो एनी इन्वेस्टर में लाइक यू एंड मे इन्वेस्ट, लाइक एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं, जिसका नाम हो ना पता हो. ओके, जस्ट लाइक विजय धीरनाथ चौहान का तो भी नाम था, ओके, अग्निपथ में. बट यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं वेयर दे एक्चुअली दे डोंट हैव देयर नेम, दे डोंट वांट टू एक्चुअली रिवील द आइडेंटिटी ऑफ देमसेल्फ, बट यही बोल दिया जाता है कि ओके ये अल्ट्रा HNI से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मीन्स जिसके पास ज़्यादा पैसा है, दे हैव इन्वेस्टेड, बट दे विल नॉट से हु. ओके, एंड गवर्नमेंट बॉडी से भी यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस. यहाँ पे देख सकते हैं अनदर वन स्टार्टअप महाकुंभ भी हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग? स्टार्टअप महाकुंभ ड्राइविंग इनोवेशन. द स्टार्टअप महाकुंभ इज ए फ्लैगशिप इवेंट है ब्रिंगिंग टुगेदर स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स, सूनिकॉर्न्स. Okay, I have spoken about this particular unicorn, Sunicon, Decacon, Hectacon. मैं एक शॉर्ट में आपको बताया था. Please go to that particular short and you can know about what are those. Okay, तो यहाँ पे industry leaders, ecosystem stakeholders under one roof. Okay, it showcases India's entrepreneurial spirit and technological progress while fostering dialogue to strengthen the national startup ecosystem. Just like महाकुंभ में सब इकट्ठा हो रहे हैं, ये स्टार्टअप महाकुंभ में पूरे इन्वेस्टर्स आएंगे, गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट पर्सनस आएंगे, एंड यू पीपल मी लाइक मी यूनिकॉर्न्स, ऐसे इंडस्ट्रियल जेंट्स, शार्क आएंगे. The first editions of this particular महाकुंभ held in the year 2019 with 500 startups आए थे, investors भी आए थे, industry leaders भी आए थे, attendance were given. So you just understand that fifth edition हुआ था दिल्ली में. So आपको जाना है यहाँ पे रजिस्टर करना स्टार्टअप महाकुंभ में. If you are having any of your partners or siblings or any of your relatives actually doing startups, make sure that they do go to this particular महाकुंभ. वहाँ पे वो पैसे देंगे investors, you it will ease your situation. आप बच जाएंगे with regard to what loan, debt, shares, etc. so and so forth. Okay. Now, so we have seen what is a startup and how it has grown. Achievements we have seen. Key features of startup we have seen.
ओके, देन वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट फंडिंग मैकेनिज्म, किस तरीके से स्टार्टअप फंड होते हैं हमारी कंट्री में. द फर्स्ट स्कीम दैट वी आर हैविंग इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स. Okay, aims to offer credit guarantees up to a specified limit, easing access to funding for startups. So basically, under this scheme, you will get what? Credit is given to the startup. That credit is guaranteed by the government. मीन्स SBI अगर पैसे देगा आपको मुद्रा स्कीम में, तो SBI बोलेगा एक मिस्टर एक्स मेरे पास से 1 crore रुपीज़ ले लिए एज ए बिजनेस, किसमें? मुद्रा में. ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल टोल्ड टू SBI कि आप मुद्रा स्कीम इम्प्लीमेंट करो. Then SBI told that I will implement, sir, the Mudra scheme. But what if it is non-collateral loans? But what if the person does not give me back? Then the government said with a big smile, "Bhai, don't need to worry. Whatever you want, whatever the loss is there, we will bear it. So we will guarantee your credit. आपकी credit पे हम guarantee ले रहे हैं as a government. What else you want?" So that is how SBI को loans, SBI and all other public sector banks are giving loans to the startups. Then another one is fund of funds for startups. We have already seen about it. Startup India Seed Fund Scheme launched in the year 2021 with a corpus of 945 crores. This scheme supports startups at various stages, including proof of concept. पहले दिमाग में एक concept बना लीजिए, just like a concept like आर्टिफिशियल ट्रीज लगाना है जो कि प्रोड्यूसेस मोर क्लोरोफिल, दिस इज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. उसके बाद में एक छोटा सा आर्टिफिशियल ट्री बनाइए, आप घर के पास लगाइए और देखिए कि वहाँ पे एयर क्वालिटी किस तरीके से इम्प्रूव हुई. आफ्टर डूइंग दैट, वो आप घर में लगा दिए, एयर क्वालिटी देख लिए, इट इज़ गुड. देन यू डू इन योर एरिया, आपकी जो कॉलोनी है ना, वहाँ पे ये आर्टिफिशियल प्लांट्स बनाइए जिसमें ज़्यादा क्लोरोफिल आप डालें एज अ टेक्नोलॉजी. फिर वहाँ पे एयर क्वालिटी वो एरिया की आप देखिए. इफ़ दैट इज़ ऑल्सो डन, देन यू कैन गो फॉर दैट व्हाट, ये बड़े बड़े ट्री सब लगा सकते हैं. सो इन ऑल स्टेजेस from the concept to the prototype to the mass entry to the commercialization, etc., so and so forth, market entry, etc., so and so forth, you will be funded. Government will give you financial assistance. That is only called as Startup India Seed Fund Scheme. Seed Fund Scheme. Is it clear to everyone? Please do put in the live chat session, comment kariye, this is all clear to you. If that is there, then we can go ahead in our next topic. What do you say, guys? Is it clear? चलिए, let us see the NITI Aayog. Some schemes are there which I really loved. One is शून्य, zero pollution mobility. It's nothing but a campaign. मतलब कैंपेन का मतलब है अवेयरनेस जनरेट करना, ठीक है. कैंपेन प्रमोट द यूज़ ऑफ EVs फॉर अर्बन डिलीवरीज एंड राइड हेलिंग. अर्बन डिलीवरीज जो भी होते हैं, लाइक इन दैट उबर, ओला, वट एवर दी अर्बन, स्विगी, जोमेटो, दीज आर कॉल्ड एज अर्बन डिलीवरीज जो भी होते हैं, अमेजॉन, वट एवर इट इज. सो दे हैव टू बी यूजिंग व्हाट, EVs यूज़ करना है एंड राइड हेलिंग. और जो जोमेटो नहीं, अपना उबर मोटो बाइक पे जाने वाले, EV यूज़ करो. शून्य मीनिंग जीरो इन संस्कृत लैंग्वेज इम्प्लाइज द बिगिनिंग एंड ओरिजिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज. शून्य देखो कितना अच्छा वर्ड है. ओके, आई रियली लव इट. वाई? बिकॉज शून्य बोले तो जीरो. किसी के लिए ये जिंदगी जीरो हो सकती, किसी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती, राइट. सो शून्य इज द मोस्ट, what I say is that the alphabet, or you can say that शून्य is the most perfect number you can perceive. अगर आपके दिमाग से, अगर किस तरीके से हमारा दिमाग काम करना चाहिए, हमारा माइंड किस तरीके से होना चाहिए, so you can say proper distinction, like zero denotes what, failure, zero denotes the starting point also. So एक positive mindset बनाने के लिए you can suggest this particular as a example to your friends. Okay. Then e-Amrit scheme is also there. It's a one-stop destination for all information on electric vehicles, busting myths around the adoption of EVs. So यहाँ पे e-Amrit में, okay, basically Amrit in the form of what, information feeding कर रहे हैं. Government is feeding the information to all of us, saying that देखिए EV vehicles बहुत अच्छे हैं, उसमें कुछ खराबी नहीं है. Okay, तो यहाँ पे आप देखो एक मिथ क्या है EV का. Those who are watching me, just tell me what is the myth of EV. EV आपके घर में नहीं है तो क्यों नहीं है? बस एक क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए, रिप्लाई. मुझे एक आंसर चाहिए मेरे को. आपके घर में अगर EV व्हीकल नहीं है तो क्यों नहीं है? बस ये बोलिए. यस, हर्षित, रोहन, शैलेश कुमार, दोज आर वाचिंग मी, प्लीज टेल मी दैट अगर आपके घर में EV नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं खरीद रहे आप?
सो चलो मैं ये बोलता हूँ, मेरे घर में भी ईवी नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि देखिए सर, वो कभी कभी न्यूज़ में आता है कि उसका इंजन फट गया, ठीक है, फायर लग गई। और कभी कभी ये भी बोल रहे हैं कि ईवी इसलिए नहीं ख़रीद रहे हैं कि इसकी बैटरी कहाँ पे रिचार्ज करें, और बैटरी रिचार्ज करने के लिए तो 2-3 घंटे हो जाते हैं। सो बैटरी रिचार्ज करने के लिए 2-3 घंटे हो जाते हैं। सर हम तो पेट्रोल पंप पे अगर 2 लोग भी हैं तो हम वहाँ से गाड़ी हटा के कहीं और पेट्रोल पंप पे जाते, तो हमारे पास 10-15 सेकंड का पेशेंस नहीं है टू एक्चुअली स्टैंड देयर एंड रीफिल अवर पेट्रोल एंड डीजल। तो उतना भी 1-2 मिनट का भी अपने पास पेशेंस नहीं है, तो आप बोल रहे हैं कि 2-3 घंटे ईवी की चार्जिंग करो। तो इस वजह से भी, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग है चार्जिंग करने के लिए, तो हम ईवी नहीं ले रहे हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो यहाँ पे ऐसे जो मिथ्स होते हैं कि ईवी व्हीकल जल रही है, कहीं और फट रही है, ऐसे जो मिथ्स होते हैं ना, वो पूरे ईवी रिलेटेड जितना भी मिथ्स है, दैट ऑल मिथ्स विल बी बस्टेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट ई अमृत पोर्टल पे जाइए। अगर आप ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर ईवी कंपनी में काम करते हैं, आपके ओनर्स को बोलिए कि ई अमृत पोर्टल में जाके यहाँ पे ऑल इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू ईवीज आर गुड बोल के वहाँ पे बताया गया है। तो आप आपके ओनर को, जो भी जहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको बोलो कि ये सब उन्हें जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं ये सब लिखिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है। ओके, the portal has also developed and hosted by NITI Aayog under the collaborative knowledge exchange program with UK. UK government and Indian government together have the building the knowledge under this particular e-Amrit portal as a part of UK India joint roadmap 2030. ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है छोटे एग्जाम्स में। India UK joint roadmap is to be by which year, to be completed by which year, 2025 2030. So the answer is what, 2030. Now a very important update for all of you students. If you want to invest in पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अगर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट करना है, लाइक SBI में इन्वेस्ट करना है, कैनरा बैंक में इन्वेस्ट करना है, डू वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स? जो भी हमारा सेविंग्स है, चलो भाई बैंक्स में लगाएंगे, बिकॉज यू नो दैट द मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स विल बी ऑन द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ गॉड गवर्नमेंट ऑफरिंग्स। गवर्नमेंट जितनी भी ऑफर करती है, तो दैट लाइक वेदर इट इज बॉन्ड्स, वेदर इट इज शेयर्स, वेदर इट इज IPOs, वॉट एवर द गवर्नमेंट ऑफरिंग्स आर देयर, those are considered as what, so secured investments. So when we are given a chance to invest in public sector banks like SBI में मैं भी ओनर हूँ, अगर बोलना है ऐसा 0.00001 की इक्विटी भी लेके अगर बोलना है कि मैं SBI में ओनर हूँ, आप बोल सकते हैं, क्योंकि SBI और कैनरा बैंक दोनों IPO रिलीज करने वाले हैं, वेरी श्योर। Initial public offerings are nothing but for the very first time a company is going to issue what, shares, nothing but giving out its ownership, but not exactly in the bank, but bank subsidiaries and joint venture. SBI का एक सब्सिडरी है SBI पेमेंट सर्विस, SBI का और एक सब्सिडी है SBI जनरल इंश्योरेंस। ओके, SBI का खुद का एक नॉर्मल प्राइमरी बिजनेस है, व्हाट, SBI इज ए बैंक्स। सो SBI इज हैविंग ए बैंक, SBI इज हैविंग अनदर जॉइंट वेंचर, एक सेपरेट एंटिटी, एक सेपरेट कंपनी बना के रखे हैं, दैट इज SBI पेमेंट सर्विस। देन वी ऑल्सो हैव SBI जनरल इंश्योरेंस। सो नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो भी सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स आर देयर, government of India wants them to go for privatization. So for that purpose, these companies may release in future IPOs. So you can become a part of what, SBI जनरल इंश्योरेंस के आप ओनर हो सकते हैं, जो कि 0.001% भी हो सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। दैट इज वॉट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर, ये जो स्लाइड में जो भी लिखा हुआ है, दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर इट। Among the potential candidates we are having SBI. Okay, so SBI payment service, SBI general insurance. SBI payment service is a joint venture with Hitachi payment. ओके, सो गवर्नमेंट इसको मोनेटाइज करना चाह रही है। कैनरा बैंक हैज़ ऑलरेडी बिगन प्रिपरेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ इट्स एसेट्स मैनेजमेंट जॉइंट वेंचर। कैनरा बैंक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, कैनरा बैंक की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। व्हाट इज इट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज नथिंग बट, अगर मैं कैनरा बैंक से एक लोन लेता हूँ और मेरा घर गिरवी रखता हूँ, सपोज मैं लोन नहीं दे सका हूँ, तो वो दे विल टेक माई घर, फॉर देम इट इज़ व्हाट, एसेट। अब इसको बेचें कैसा, इसको क्या रिनोवेशन करके बेच सकते हैं जिससे उनको प्रॉफिट आएगा, वेदर इट इज़ अ लैंड, वेदर इट इज़ अ बिजनेस, वेदर इट इज़ अ रिसोर्ट, वेदर इट इज़ अ होम, वॉट एवर इट इज़। सो इफ एनी बडी डज नॉट पे ए पर्टिकुलर लोन एंड वॉट एवर द
asset which is mortgage with the bank, that asset will be managed by what bank only with the help of a joint venture. एक private player को लेके दोनों मिलके उसको किस तरीके से बेचे so that they will earn what profits, that is only called as asset management company. Canara Bank has tied up with what? Okay, Robeco Asset Management Company. Along with that, Canara Bank also have tied up with HSBC to issue what? Life insurance. To issue life insurance. I hope this is clear to you. So all those who are there in the live chat, can you please tell me, is it clear? Is it clear? This is a very big topic. This topic will cover tomorrow. Okay? Tomorrow on same time 12:30. Please come for the economic current affairs. Okay? And do join our sessions. Do join the UPSC NCERT Foundation course 2026-2027. You know that how the various demo classes are taken by the Ojha sir, and the quality of content that we actually upload and the materials we generally provide. And you also have weekly current affairs on the IQRAIAS.com website. Make sure that you visit the website and see the demo lectures and see the quality of content that we are giving to you. You can be a part of it. You will be guided throughout your journey, and we'll make sure that you'll crack the examination. I'll